And the anger visible there on the streets, Mr. Giri. But tell us also about the corruption charges, really, that the protesters are talking about against the government here, because they're out on the streets not only for them to reverse the social media ban that we've been talking to you about, but also claiming that this government is highly corrupt. Exactly. They are also demanding to clean up the system, because there is one after another. There has become cases of the cases of bad governance, corruption, all these kind of things taking place in the system, and it has been taking place since since years and years, and there is a systematic cases of corruption in the system. That is why they want to abolish this kind of corrupt political systems, and they are exposing the one after another corruption cases in the media and the social media. That is why people are frustrated against the political elite in Kathmandu. So that is also the adding the fuel. That is why one of the major demands of this protesters is to clean up the mess, clean up the political system, corrupt system also. Okay, so there is so people are already furious. People are already angry over the corrupt political system, political parties, and there are repeated the same old faces are running the country. That is why there is a frustration among the people now. It has fueled and triggered more by this social media ban. That is why it has taken a toll now. There is a mounting frustration among the people due to this corrupt political system and the social media ban. Right. Mr. Giri, when was the last time you saw protests of such scale on the streets of Kathmandu? This is unprecedented in many ways. The youth, singularly the youth here, taking on the government in Nepal. Right. So this is probably for the first time this kind of things is happening in the street of Kathmandu. Earlier there used to be the protest in Kathmandu called by the political parties, but this is for the first time this protest, and it's coming spontaneously. Nobody is leading this protest. All the youth they call the youth the generation what they call Gen Z. This protest is led by Gen Z or Generation Z. And it is a spontaneous kind of protest. Nobody is leading the protest. The new generation, they come spontaneously without any hesitations, without any kind of political kind of things, any political ideology. So no leader is there. It's a spontaneous kind of protest in the street by the Nepali youth. And for the first time in the history of Nepal, Nepali youth have come up in the street and the protesting against the regime and the corrupt political system and the social media ban. So probably in this scale, this is the first time in this scale, this is a big mass protest in Kathmandu. Mr. Giri, this is Gauri Dwivedi here in the studio. This has been a bit of a political upheaval as far as Nepal is concerned. There were protests that took place. They were, of course, pro-monarchy protests. Now you have the youth coming out and protesting against the government. Any sense that you're getting that is there any alignment that this group may have, any political alignment, any political ideologies that could sort of put some of this into context? So there is no such kind of political, I know that every political party, all political parties, because since the new generation is coming, every Nepali, all major political parties, of course all small, big political parties, they have been supporting the movement, okay? So, but they have also called to, come spontaneously without having any flags and slogans of the party and ideology. So political parties, basically political parties, they have extended their, support to the, movement of the Gen Z. Okay, but there is so these people these youths are coming, on their own way, on their own belief, on their own ideology. So as of now, there is no clear political alignment or clear political ideology that is backing this kind of things, but many youth leaders, many, social media influencers and others, they have come in the street, including there is very influential, youth leader. His name is Balen Saha, the mayor of Kathmandu metropolitan city. So yesterday, he is very, very popular among the youth, youth and Nepali people. He also come up with the statement that he has extended the support to the, this youth movement. So, like Balensa and other political party leaders also, they have extended the support to this movement. So that is why, I don't see, as of now, we cannot say that this is backed by any political group or political party or political any ideology. So it seems
very, very, spontaneous kind of movement as of now. All right, viewers tuning in right now to NDTV, what you are seeing on your screens are visuals coming in from Nepal. A protest essentially led by the youth of Nepal is protesting on the streets in Kathmandu, wanting to hold the government responsible and accountable for what they say is massive corruption that has taken place under KP Sharma Oli's government, and also with regard to some of the social media bans that have been put in place. What you see on your screens are those visuals of Nepalese youth coming out on the streets protesting against several of KP Sharma Oli's policies, particularly with regard to corruption. All right, Mr. Giri continues to be with us. Anil Giri, who's joining us from Kathmandu. He's a journalist in Nepal. Mr. Giri, then anything specific in terms of demands that these youth have? What are their key demands which has brought them on the streets in Kathmandu? So basically they have put three demands. One is that unban the social media. They have asked to remove the social media ban. And the second thing is that they have also demanded to, that all the old leaders should, resign, they should step down, including the Prime Minister. Today, some of the, protesters, they have demanded the joinness of the Prime Minister also. And the thing is that they want to clean up the, political mess, basically corruption mess. So there is a corruption in the system. We have to ensure that there is no corruption, there is nothing, that the corruption is not taking place in the system. So they are demanding this kind of thing. They have put three demands in return, while announcing the protest. Okay, so basically we have not heard anything from the government side. So as of now, and this is also against the undemocratic governance in Nepal. So these are the major three demands of the protesters, and the government has not come out, has not made its position public on addressing the demands of the protesters. So let's see, there will be some words by this evening by the government. The government will say something about by this government. As of now, government is busy on quelling the protest and now suppressing the protest, this kind of thing. The government has imposed a curfew. So this is the situation in Kathmandu. And we don't know what will happen next. Tomorrow, what kind of, what direction this protest movement will take place. But as of now, there is no any address from the government side. Government hasn't responded, which is the government of Nepal hasn't responded to these protesters, which is the youth in Nepal protesting against what they say is rampant corruption. The fact that, Mr. Giri, this has been a spontaneous protest with thousands of protesters on the streets coming out without any organized group, so to say, an umbrella group under which they've all been organized, itself raises questions, doesn't it, in terms of how it's panning out? And also, let me then ask you about your sense about how the government in Nepal is viewing this, because this is a very large gathering of youngsters who've come out and with their specific demands. How is the government of the day watching this? Are they looking to speak to these protesters, probably having some back channel lines of communication? As of now, we have not heard this kind of thing, back channel negotiation or back channel, between the protester and the government. And probably government is trying to reach out with them. But the thing is that the scale of the protest in Kathmandu is massive and huge, and there is anger among the people and the public and the youth. So probably government should unban the social media ban first. So this is not only the demands of the youth who are protesting today. So this is because social media has been the part of the life. Okay, so Facebook or messaging apps, they have been a part of life. And how millions of people are relying over this. Small business people are also relying on doing the business. And people who their relatives are talking over the Facebook, and people are informed over the Facebook. So there are misinformation and disinformation in social media platforms. So now, as of now, there is no any word from the government side. Probably
there is and the government is under pressure. Government is under now pressure to do something to address, their demands of the protester. Definitely, one protester has already been died. We have known this thing from the police, and over 100 protesters have been injured, and they are undertaking treatment in the hospitals. Definitely, this has given a very bad step already to the government. That is already in a very, very difficult situation. And army has also been mobilized. So probably by this evening we will hear something from the government side. But as of now, there is nothing coming out from the government. Probably they are assessing the situation, ground reality, and by evening something will come up. Stay with us, Mr. Giri, because I want to now rope in Veena Sinha as well, who's joining us on the phone line. Veena जी, ये बताइए आप क्या देख रही हैं इस वक्त, क्या स्थिति है ऑन ग्राउंड? कुछ हमको डिटेल में समझाइए, आप एग्जैक्टली हैं कहाँ पे और इस वक्त चल क्या रहा है सड़कों पर, क्या स्थिति है? कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी वहीं डटे हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जहाँ घायलों को ले जाया गया है वहाँ भी बहुत भीड़ है, जो आपको संसद भवन के बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ भी बहुत सारे प्रदर्शनकारी जमा है, वहाँ भी गोली चलाई जा रही है, आपको रबर की गोली वहाँ भी चल रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं है। और ये पुलिस के एक्शन तब शुरू हुआ जब ये लोग संसद भवन के कंपाउंड के अंदर घुस गए थे कुछ लोग, तब गोली चली है। और आप तो सब जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है, आपको प्रधानमंत्री निवास, राष्ट्रपति निवास और आपको नारायण नीति जो पूरे पहले राजा के जो निवास स्थान था वहाँ पर, और संसद भवन के आसपास के सारे इलाके में सारे सड़क बंद कर दिए गए हैं, उधर से आने जाने का पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। आर्मी भी आ गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी वहीं है, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वीना जी, ये बहुत गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री आवास के पास तक ये सारे प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और इतनी भारी मात्रा में प्रदर्शन चल रहा है। क्या कारण है कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए? क्या उनकी मेन डिमांड है, क्या चाहते हैं वो इस वक्त, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मेन प्रदर्शन ये भ्रष्टाचार को लेकर जनता में पहले से ही आक्रोश था, लेकिन ये आक्रोश बाहर व्यक्त नहीं हो पा रहा था। और इसमें मैंने आग में घी का काम किया। आपको जब ये जो 26 संजाल है जो बंद कर दिया गया, उसके बाद तो ऐसे लोग रोड पर नहीं आ रहे थे, सड़क पर नहीं आते थे, कम से कम संजाल के माध्यम से तरह तरह के प्लेटफॉर्म से लोग अपने आक्रोश व्यक्त करते थे। लेकिन अब उस सब सारे बंद कर दिए गए हैं। और ये प्रदर्शन आपको ये जानकारी दे दूं मैं कि काठमांडू में ही नहीं हो रही है, पूरे नेपाल में हो रही है। और यहाँ जब तक कि प्रधानमंत्री के जो घर है, मैंने उनका जो जहाँ के हैं वो झापा, वहाँ भी हो रहा है, दमक में भी हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, एंड आई वांट टू क्विकली टेल दिस टू आवर व्यूअर्स एज वेल. As per Veena Sinha, the journalist from Nepal who's on with us on the broadcast, the protest is not restricted to Kathmandu but is taking place in several other cities of Nepal. Veena जी, ये बताइए और कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त? अभी आपको इलाम में भी चल रहा है, वहाँ भी गोली चली है, दमक में भी गोली चली है, झापा में भी प्रदर्शन आ रही है। ये सब एरिया आपको प्रधानमंत्री के मैंने उनका घर है वो उस साइड में, मैंने यहाँ काठमांडू नहीं है, वहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ के वो सांसद हैं। उस एक इलाका में भी पूरी जगह मेन प्रधानमंत्री को लेकर ही विरोध हो रहा है कि ये भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रहे हैं। कोई भी यहाँ पर मैंने प्रगति विकास कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जनता उनसे काफी रुष्ट है। और ये युवा पीढ़ी तो और ज्यादा ही परेशान है। यहाँ के जो अव्यवस्था फैली हुई है, भ्रष्टाचार जो फैले हुए हैं, रोजगार नहीं है, आपको विकास का काम नहीं हो रहा है, सारे युवा सबको विदेश जाना पड़ रहा है। और यहाँ पर नेपाल में शिक्षा की व्यवस्था उसी तरह, यहाँ तो शिक्षक लोग भी आंदोलन है, लेकिन आज के आंदोलन में वो लोग नहीं है। आज के आंदोलन में वो जेएनजी वाले हैं, मैंने आपको जो युवा पीढ़ी है 25 से नीचे के, वो लोग युवा लोग है। और इसका कोई भी जिम्मेदारी कोई भी पार्टी या संघ संस्था अभी तक कोई नहीं लिया। ये सब देखिए, सारे लोग जमा हो रहे हैं। आपने आंदोलन शब्द का प्रयोग किया है। आंदोलन एक बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। आंदोलन हम देख चुके हैं,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पिछले 1 साल में आंदोलन क्या होता है हमने देखा है। तो आंदोलन शब्द बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, but and which is why I will refrain from using that word. The Indian subcontinent, the India and its neighborhood has actually seen something like a revolution led by youth, primarily the students in our neighborhood last year. So I'm going to refrain from using any of those words. What it looks like right now is a protest led by youngsters in Nepal, and their primary angst against the government is regarding corruption. Again, this is a playbook that I'm not going to try and relate to what happened last year in Bangladesh. But the other point that I'm going to come back to, वीना जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार क्या कह रही है इस वक्त, नेपाल की सरकार क्या कह रही है कि ये जो इस वक्त प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पे सड़कों पर आए हुए हैं, सोशल मीडिया बैन के लिए वो मांग कर रहे हैं कि ये बैन हट जाना चाहिए, उसको लेके सरकार क्या कह रही है? नहीं, सरकार आज तो अभी तक सरकार जब प्रदर्शन शुरू हुआ है 12 बजे से यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन उस समय तक अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। लेकिन कल जो बीत गया है, कल उस दिन अब वहाँ सूचना प्रसारण मंत्रालय के से यह आया था कि हम जब तक ये लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं करा लेते हैं नेपाल में, तब तक हम लोग बैन नहीं हटाएंगे। तो अब मैं इससे पहले भी आपको बताई हूँ कि जो सरकार में जो सबसे बड़ी पार्टी शामिल है नेपाली कांग्रेस, उसके सांसद और नेता से जाकर अपने सभापति को ये इस बात के लिए आगाह किया था कि आप इसको प्रधानमंत्री से मिलकर मैंने बैन को वापस करवाइए, नहीं तो बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाएगा सारे देश के। कि ये जो आंदोलन आज जो शुरू हुआ है वो उसकी तैयारी तो 4-5 दिन पहले से सब जगह आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दो छोटे माध्यम से, उस माध्यम से खबर हो रहा था कि अगर सरकार नहीं हटाती है, हम लोगों को बोलने का जगह नहीं देगी या कोई प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध करा रही है, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। ये सब बात हो ही रही थी, इसीलिए वो पार्टी, आपको सबसे जो बड़ी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, वो उनके सांसद और नेता इसके लिए चिंतित थे कि हमारा पार्टी का भी पोजीशन डाउन हो जाएगा, आप इस पर कुछ कीजिए। लेकिन अभी तक न सभापति जो शेर बहादुर देववा हैं, हम कुछ we'll also play some reactions for our viewers, but वीना जी, एक मैं प्रश्न ये पूछूंगी आपसे कि अगर सोशल मीडिया डाउन है, व्हाट्सएप और कोई और मैसेंजर चल नहीं रहे हैं, तो ये लोग एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं और कैसे एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? कैसे बात हो रही है? तो कहीं ना कहीं कोई तो इनको एक साथ लेके आ रहा है। वो कौन है जो एक साथ लेके आ रहा है इनको? देखेंगे, हम लोग सबका व्हाट्सएप बंद है, लेकिन आप देखेंगे सब लोग यहाँ ड्राइवर को डाउन कर लिया है, ऐप अपने लोड कर लिया है, और एक डिटेल भी है उसके माध्यम से भी कर रहा है लोग जी। ड्राइवर से मेन सबसे ज्यादा ड्राइवर को लोग डाउन किया अपने मोबाइल में। हम लोग में भी इसी तरह जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े थे सब लोग वाइबर में आ गए हैं, और वाइबर में अभी बैन नहीं हुआ है, बाकी और सब जगह बैन हो गया है। तो यही सब छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही लोग एक दूसरे को संदेश भेज रहे थे और आह्वान कर रहे थे कि सब लोग जुटे और इसका विरोध हो, और विरोध हो रहा है। आपको सारे जगह पूरे देश भर में हो रहा है, और यहाँ पर गोली उधर भी चली है, लेकिन उधर अभी घायल हुए हैं लोग, डेथ नहीं हुई है, मरे तो कभी काठमांडू में ही।